Hello, good afternoon, everyone. So, I'm Sai Krishna. I have secured All India rank 125 in the UPSC Civil Services Examination 2025. This is my fifth attempt, and I have started my first attempt in 2021, and my preparation around early 2021. So, I have graduated from BITS Pilani in 2016, and I have worked in IT for 5 years. And then I have left my job to pursue uh, my interest in the civil services by setting up a plan B. By then, my 5 years experience would also I currently have मतलब मेरे को है कि मैं कभी भी वापस जा सकता हूँ तो and I'm also married for 2 years now, and I'm currently working as a Mandal Parishad Development Officer in Government of Andhra Pradesh. So I have taken a leave for especially for before 2 months, 1.5 2 months before prelims until I'm done with the mains, and then I have extended my leave to prepare for the interview. So this has been my journey in the context of the civil services examination. So सबसे पहली चीज मैं जो बोलना चाहूँगा, the first thing is it has become very competitive, and don't put all your eggs in this basket. So make wise decisions by weighing the amount of time that you can invest in this and the amount of resources you have and you can afford. ठीक है? तो मतलब कुछ financial backing है, and you don't have to take care of your family. Yeah, you can go outright after graduation, because पहले के years में your energy levels and your insecurities, तुम्हारे life में dependencies, they'll be lesser as compared to as you age towards 30. So for me, I could feel the more competition during this attempt than my second attempt, in which I have gone till interview in 2022. So पहले ही कर लीजिए, and make sure you have a plan B. And one more important point is, don't uh, get into that habit of uh, picking your graduation subject which you are planning to take as optional for UPSC. तो जैसे ये हिस्ट्री कर लिया because you want to have history as an optional rather than your genuine interest and your तुम जो परसीव करते हो अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स इन हिस्ट्री, तो उनको उनके बेसिस पे तुमको ग्रेजुएशन आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए rather than the based on the decision that you will be picking so and so subject for as optional in UPSC. So don't do that, because there is only point not 1% of success rate in this exam, and open category के लिए तो और भी कम. So this puts you in a very stressful situation जब तुम्हारे पास एक fallback option नहीं होता है, and you'll be lost after if in case you don't clear it. Hopefully uh, and actually reality is हर कोई clear नहीं कर सकता है. So it's only 1,000 posts, around 1,000 posts per year, and the people who are competing for those 1,000 posts are around 1 million. And मतलब कम से कम 50 to 60% लोग actually attempt देते हैं, which is 5 to 6 lakhs, and at least 1 lakh candidates would be preparing seriously for this exam and putting their really good efforts. So it's a competitive exam in the end, and everyone's success is not guaranteed. तो आप उनके बेसिस पे take wise decisions, consult elders, also consult the people in the services or people who have graduated from this journey before you start. ठीक है? Then plan about your time investment, then think about the exam and the resources, क्या books पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब. First, know what all and the job of an Indian administrative service of or Indian police service or foreign service, whatever the service you are aspiring for. पहले जानो वो क्या करते हैं on their regular business as usual, and then consult people who are aware of this process, and then make a decision how much time you want to invest.
तो ऐसा करो। इन माय ओपिनियन वन प्रॉपर अटेम्प्ट 1 टू 2 इयर्स के टाइम इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉपर अटेम्प्ट दिया जाता है फुल टाइम। Once you give one proper attempt, you'll understand the intricacies of this exam. There's a lot of free guidance, lot of content in the market. All you have to do is differentiate which suits you and which doesn't. तो उसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रैटेजी बना लीजिए, किसी को कंसल्ट कर लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स इन द मार्केट, ठीक है? कर लीजिए, देन प्लान योर अटेम्प्ट्स, ठीक है? तो दैट्स हाउ यू स्टार्ट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इट वाज आई थॉट आई विल गिव 2 मेंस, दैट्स इट। एंड मेरे को ये नहीं पता था वो 2 मेंस देने के लिए 5 अटेम्प्ट देने पड़ जाएँगे। बट या as I look back, I think I could have invested lesser amount of time in this because at I am 31 years old now. अब मैं बनूँगा कुछ, लेट्स से पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। I'll be having only 29 years of service left। मतलब उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट yeah, that's less exciting than having 35 years of service or 38 years of service। and उस टाइम पे more flexibility, mental flexibility ज़्यादा होती है biologically। So you'll be able to learn a lot, you'll be able to perform much better। So, nonetheless, I'm excited. I'm happy for my result. I'm relieved that I need not give another attempt or think about uh, uh, choosing one among the fallback options। तो ये ऐसा है, दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अबाउट द रियलिटी। ये मैं बताना चाह रहा था बहुत दिन से, सिंस द रिजल्ट केम। And so now we'll get into the specific strategy of prelims, mains, and interview, and how to handle those failures in case you don't clear any particular stage. I haven't cleared 3 of my 5 prelims that I have given, and I haven't cleared one of the 2 interviews I have given. Matlab, one of the 2 overall mains examinations. So yeah, so regarding prelims, the books list is general conventional books list। The polity के लिए लक्ष्मीकांत, economy के लिए I have referred to Shankar Ganesh, and environment के लिए I have referred to Shankar IAS का जो material आया था, I have made a notes out of it, and in my subsequent attempts I have referred to the notes for the static portion। और करंट अफेयर्स के लिए और बहुत सारे मैगज़ीन्स, कंपाइलेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं ही। पिक ओनली वन ऑफ दोज़ एंड रिवाइज़ इट रिपीटेडली। एनवायरनमेंट के लिए दिस इज़ दैट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इट्स वेरी डायनामिक, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन स्टैटिक क्वेश्चन्स दैट आर आस्क्ड एवरी ईयर। तो इफ यू हैव डन योर schooling well, you'll be able to answer those easily। But if you want to revise now, if you want to refresh your memory about science aspects now, so you can refer to 9th and 10th, certain selective chapters of 9th and 10th NCERTs, if you ask me। जैसे वो PYQs के बेसिस पे आप डिसाइड कर लो। आई मे नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट द चैप्टर्स बिकॉज़ मैंने नहीं रेफर किया। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स ज़्यादा मैटर करता है। पिक वन कंपाइलेशन, वन कंसाइज़ कंपाइलेशन, उसको रिपीटेडली पढ़ो। और क्या बचता है ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th के एनसीईआरटीज़, डू देम रिपीटेडली एज़ मेनी टाइम्स एज़ यू कैन। यू कैन सॉल्व 60 to 70% एट लीस्ट, द लीस्ट। तो इतना तो कर ही सकते हैं वो रेफर करने के बाद। सो दिस इज़ अबाउट ज्योग्राफी। हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ 6 to 10th एनसीईआरटीज़ कर लो and revise them, make notes out of it, revise them कर लेना। And 11th के तमिलनाडु textbook has helped me for ancient history, although I haven't revised it many times। In case of ancient and medieval history and even modern history, PYQs have helped me a lot। So this is about history। और करंट अफेयर्स और मैपिंग के लिए कोई ना कोई छोटा सा कंपैरिजन उठा लो, and pick only one and revise it repeatedly। So I have been repeating myself in all this through all these subjects, subject wise book list, कि for prelims you revise as much as you can। And बहुत ज़्यादा फैल मत जाना। it if you can restrict yourself to some good resources, not best भी ज़रूरत नहीं है। If they are good, that's fine।
just revise them repeatedly. Some recommended by some other topper, or कहीं पे भी आपको अगर पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि दिस कैन बी यूजफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PYQs, तो ये कर लेना। तो फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर प्रीलिम्स इज टू बी वेरी वेल वर्स्ड विथ PYQs। तो वो रिपीटेडली कर लो, यू विल अंडरस्टैंड द sense in which UPSC puts these questions. तो the language that UPSC uses, कुछ क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। सो अमॉन्ग दोज विच कैन बी करेक्ट, मतलब मेनी कोचिंग सेंटर्स के कीज वेरी करते हैं। दैट्स वेयर द कीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वेरी बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे द मतलब बिहाइंड द क्वेश्चन दैट इज पुट इन द एग्जाम। तो वो यूपीएससी के पीवाईक्यूज करने से, एक्चुअल पेपर्स के पीवाईक्यूज करने से, एंड फॉर एग्जांपल 2026 के अटेम्प्ट दे रहे हो तो रेफर टू द पीवाईक्यूज ऑफ अदर एग्जाम्स of UPSC that UPSC conducts, like the exam of geoscientist, CDS। तो इन सब के भी MCQs साइड में सॉल्व कर लेना, तो दैट दोज विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग the pool of questions that UPSC contains, and all these things. So this is about prelims. So once there are two directions that we go from prelims, whether you clear prelims or you don't clear prelims. First, we'll focus on if you don't clear prelims. So see that you are not wasting a lot of time। 2-3 हफ्ते ले लो to gain uh, yourself back, थोड़ा emotionally handle कर लो, because failures are not easy to handle, but yeah, they'll certainly teach you। मैंने तो बहुत सीखा है। The best thing I have learned in my journey is how to handle failures। तो वो कर लो। Get back to the grind। If you are planning for the next attempt, remember मैंने बोला, in my case I have thought मैं 2 मेंस दूंगा max to max। So in your case also, if it aligns with your plan, if you're going for the next attempt, पहले वो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हो या नहीं, based on many other your variables that are there in your life। नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना is also fine, it's very fine, it's equally fine as नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना और नेक्स्ट अटेम्प्ट देना। नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना इज इक्वली फाइन एज नेक्स्ट अटेम्प्ट देना। तो वो उस पे फोकस करो। लुक एट लाइफ एज लार्जर, इन द लार्जर पिक्चर, तो वो कर लो। तो गेन योरसेल्फ बैक। मेंस की तैयारी ऐसे ही शुरू करो जैसे कि उसी साल के मेंस दे रहे हो। इट्स नॉट प्रैक्टिकली मतलब इतना पॉसिबल, बट या दैट प्रैक्टिस विल यील्ड यू रिटर्न्स इन केस यू क्लियर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। So that will add up. It's a cumulative and incremental effort that will put you ahead of the others in this race। So uh, make it clear whether you want to give attempt or not within a month or two। मतलब वो that will help you a lot। वो that will make you prepared, that will help you gauge what are the gaps। मतलब in case mains की preparation start करेंगे prelims के बाद, तो that will help you understand where to invest your more efforts in। ऑप्शनल या कोई पर्टिकुलर जीएस पेपर या एसए की प्रैक्टिस या रीडिंग प्रैक्टिस इन जनरल और राइटिंग प्रैक्टिस इन जनरल, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस या न्यूज़पेपर की आदत डालना, या कुछ भी उस गैप में कुछ भी कर सकते हो टिल अक्टूबर नवंबर। बेस्ड ऑन द करंट टाइमलाइन, अक्टूबर नवंबर के टाइम तक का टाइम, during that time there won't be the heat of the preparation, heat of the exam approaching close। तो उसके वजह से क्या होगा, you will be able to put your efforts in a stressless manner, और बिल्कुल खुल के तुम इन्वेस्ट कर पाओगे अपने टाइम। सो डू दैट। Reach out to the people whom you consider as eligible to guide you। तो उनसे पूछो, बात करो, अपने प्रॉब्लम्स बताओ, गैप्स बताओ। दे गिव यू इनफ फीडबैक। एंड खुद का भी दिमाग लगा लेना, वो वहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट इफ यू नॉट क्लियर प्रीलिम्स, if you don't clear prelims। But the second direction, if you clear the prelims, I was able to clear prelims only twice out of 5 times। So I'm making it clear again and again because it is very important to show that uh, till the preceding day of the result, I was on that side of the table. Now I'm on this side, and it's nothing extravagant. It's
सेल्फ बिलीफ तो रखो। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, खासकर अभी 2025 और 2026 में ओनली 2 महीने का गैप है, 2 ढाई महीने का ही गैप है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। सो एंश्योर यू इन्वेस्ट द टाइम इन द कोर एसेंशियल्स, ठीक है? तो राइट मोर देन यू रीड, राइट मोर देन यू स्टडी। प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी इफ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, यू हैव डिसेंट नॉलेज बेस, थोड़ा बहुत इधर-उधर से फिल अप कर लेना अपने नोट्स में फ्रॉम करंट अफेयर्स, लाइक जजमेंट्स, कमिटी रिकमेंडेशंस, कोई एक्सपर्ट ओपिनियंस जो एडिटोरियल में लिखते हैं, इफ यू आर इनटू रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो आई हैवंट पर्सनली रेड न्यूज़पेपर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, कभी-कभी ही पढ़ा है, एंड आई हैव रेफर्ड टू न्यूज़पेपर्स वेरी वेल ओनली ड्यूरिंग माय इंटरव्यू प्रिपरेशन both the times. So I'm not yet comfortable with completing the newspaper in 1.5 hour. I still struggle, but yeah, that's an ongoing part. तो ऐसे-ऐसे इधर-उधर से जो आपको कुछ भी अच्छा लगता है इन इवन इन योर एवरीडे जर्नी, इंस्टाग्राम में या कोई भी सोशल मीडिया में कुछ, इफ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग skimming through, there are certain channels in Instagram also which I used to refer to find case studies of exemplary civil servants, exemplary social work। तो जो मैं GS2, GS3, GS1 में एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली एथिक्स में कोट कर सकता था। तो रेफर टू देम, ऐड अप, बट डोंट मेक इट द सेंट्रल परस्यूट ड्यूरिंग दोस 2.5 मंथ्स। लिखो, राइट PYQs आंसर्स, राइट द कोई मॉक टेस्ट उठा लो एंड गेट देम इवैल्यूएटेड बाय योरसेल्फ और विथ योर थ्रू योर फ्रेंड और सम पर्सन you trust, not some random faceless evaluator who is just giving the marks from the background and you don't even know him. You don't even know his credentials or something. So that won't be of much help. Yeah, so get them evaluated. Full length test दे दो, 3 hours में पेपर कंप्लीट करना सीखो। Uh, so it's been mentioned by many toppers, many people, and I'm also mentioning it. The paper completion is one of the most important aspects. So this is where the writing practice will help you. So till prelims, you have uh, read, you have focused on knowledge accumulation, तुमने वो किया है, and then now you'll have to practice to put it in the answers. So do it by practicing. So that's how you utilize your time between prelims and mains to the fullest. Now you can gauge your preparation based on which aspect, which part of the mains needs more time and effort. For example, if you're not much confident about the optional, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाओ, रोज 2-3 घंटे तो दे ही सकते हो। And if you're not sure about ethics or essay or anything, you can put an extra effort in that direction to make sure you're doing decently well. सो अब पेपर वाइज वो देखा जाए तो मेरा स्ट्रैटेजी है। तो एस्से, आई हैव रिटन वेरी फ्यू एसेस इन माय करंट अटेम्प्ट। I have written some 6 to 8 essays during my second attempt mains in 2022, which hasn't yielded much return. I scored only 105 marks. So I'll also post the link of my Telegram channel and where I'll be putting my sample answers, my mark sheets and वगैरह वगैरह इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। So, so essay mein I haven't written many, but at the same time, I have done essay thinking this time. So, which is centered around the effective and exact expression. These are the words mentioned in the UPSC uh, notification. तो effective and exact by it means कि मैं essay के ऊपर और एक separate वीडियो करूंगा, but इसमें briefly बताऊं तो if you want to say that uh, good things happen to good people, let's say this is the idea I want to convey, so you'll give an example. Good things happen to good people. These are simple words. You should write in such words rather than writing in some cryptic way कि मतलब कोई एनालॉजी लेके सिंबॉलिकली कुछ और मेंशन करने से अच्छा है, इट्स वेरी फूल प्रूफ टू मेंशन टू राइट इन सिंपल वर्ड्स
एग्जैक्ट वर्ड्स एंड इफेक्ट दैट विल बी इफेक्टिव। एंड उसके साथ एग्जाम्पल लिख दोगे, गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, फॉर एग्जाम्पल in the end गांधी जी got his satisfaction when India attained freedom। मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहा, he went through a lot। At many points he might have gone under this feeling कि क्या all of this, is it going to yield something or not, बट इन द एंड ही वाज़ रिवॉर्डेड विद दैट। तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल देके, तो इफेक्टिव एंड एग्ज़ैक्ट आपका एक्सप्रेशन एग्ज़ैक्ट तब होता है व्हेन इट इज़ रिटन इन सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस। वो इफेक्टिव तब होता है व्हेन इट इज़ सब्सटेंशिएटेड बाय एन एग्ज़ाम्पल और अ केस स्टडी। और तो ऐसा रखना, अपना आइडियाज़ कन्वे करने के तरीके को ऐसे रख सकते हैं, इफेक्टिव एंड एग्ज़ैक्ट। फॉर सो दिस इज़ अबाउट एस्से। जीएस-1 में या प्रीलिम्स प्रिपरेशन वुड हेल्प अ लॉट। एंड जीएस-1 में सोसाइटी खासकर देयर विल बी सम 30 टू 40% वेटेज फॉर सोसाइटी पार्ट। सोशियोलॉजी 11th और 12th के इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाले एनसीईआरटीज़ पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, गेट अक्वेंटेड विद द टर्म्स इन दोज़ बुक्स। वो कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करना अपने इसमें आंसर्स में। That will yield good marks in society part of GS1. I have scored pretty well in my second attempt with very less practice of answer writing. GS1 में I scored 108. This time I scored 97. I was expecting more, but हाँ तो कुछ इधर उधर हुआ होगा from the examiner's perspective। तो ये कर सकते हैं सोसाइटी में। हिस्ट्री में you focus more on the understanding part। तो ज़्यादा मेमोराइज़िंग की कोशिश मत करना। पीवाईक्यूज़ देख के, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस देख के, उस साल क्या कुछ न्यूज़ में है हिस्ट्री को लेके, आर्ट एंड कल्चर को लेके, तो उनके बेसिस पे आंसर लिखना प्रैक्टिस करो इन हिस्ट्री रादर दैन मेमोराइज़िंग। अ, क्योंकि प्रीलिम्स नॉलेज इज़ ऑफ हिस्ट्री इज़ लाइक अ, 4 सिटीज़ का 4 एंशिएंट नेम्स ऑफ द सिटीज़ देके व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द चोलास पोर्ट टाउन इन ऑफ द मिडिवल इंडिया, ऐसे पूछ सकते हैं। बट इसमें मेंस में ऐसे पूछा जाता है कि लाइक what are the outstanding features of Cholan architecture, Chola's temple architecture, or Chola's administration, anything like that। तो analytical पूछा जाता है। You have a lot of scope to express yourself। तो आपका understanding आप दिखा सकते हैं in your own words and in some borrowed terms। तो ऐसे यूज़ करो हिस्ट्री को। हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से, तो वो कर सकते हैं। ज्योग्राफी में try to draw maps if you're asked about the distribution of resources। जैसे 2022 में UPSC asked about rubber, and this year there was a question on the offshore oil reserves। तो इस साल oil reserves काफ़ी न्यूज़ में था because of Venezuela crisis। उससे पहले भी तो रशिया का ऑयल, ये सब था। तो दोज़ आर द कीज़ दैट यू कैन कीवर्ड्स दैट यू कैन रिसॉर्ट टू व्हिल फिगरिंग आउट व्हिच टॉपिक्स टू गो ड्विल डीप इनटू। तो ऐसा ज्योग्राफी में कर सकते हैं। एंड स्टैटिक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ आर द बाइबल 11th एंड 12th। उन उसमें वापस एक बार रेफर कर लेना बिफोर मेंस एंड बट राइट अ लॉट। So this is about GS1। GS2 के लिए have a compilation of judgments, committee recommendations, एंड एनी एक्सपर्ट ओपिनियंस। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत में भी दिए हुए हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का पर्सपेक्टिव्स अबाउट वेरियस सेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, राइट्स के बारे में। इवन द 42nd अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे पर्सपेक्टिव्स कलेक्ट करके रख सकते हो फॉर वैल्यू एडिशन। बट कोर स्टैटिक पार्ट GS2 के लिए यू विल हैव टू रिवाइज लक्ष्मीकांत एक बार कर लो एंड बी इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग अबाउट। इस बार क्वेश्चन था अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल के बारे में। थोड़ा आर्टिकल नंबर मेंशन करोगे आंसर में एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन करोगे, तो दैट विल help the examiner to understand that you know about it। And then you can do the value addition about any cases, any particular instances where attorney general's role was uh, very much visible। तो गवर्नेंस की बात आती है, तो गवर्नेंस में आई हैव रेफर्ड टू कंपाइलेशंस।
कोई भी उठा के देख लो, जैसे मेंस 365 है, सो दे विल गिव यू अ फ्रेमवर्क ऑफ आंसरिंग दोस गवर्नेंस क्वेश्चंस, क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। आई हैव रेफर्ड टू वन ऑफ द अर्लियर टॉपर्स, उत्कर्ष द्विवेदी सर ऑफ 2019, उनका ब्लॉग काफ़ी हेल्प किया मेरे को टू रिस्ट्रिक्ट दिस दिस नॉलेज इवन पर्टेनिंग टू जीएस3 आल्सो। तो गवर्नेंस में ऐसे करो, इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ वेरी वास्ट, so you better practice in international relations through mock tests, through PYQs, and learn drawing a bit of maps in the international relations questions also. जैसे इंडिया के नेबरहुड के बारे में पूछा जा सकता है, and even the IR questions will be centered around either international bodies, multilateral bodies, or India's role in any particular geopolitical theater. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जैसे इंडिया का नेबरहुड हुआ, या आसियान, या IPEF, क्वाड, इनमें इंडिया का रोल। सो दीज टू आर द थीम्स दैट यूपीएससी इज कंसर्न अबाउट, यूपीएससी टचेस। सो दिस इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो आप प्रैक्टिस करो, ट्राई ड्राइंग मैप्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस बहुत काम आएंगे इसमें, रेफर टू एनी कंपैरिजन, एनी ब्रीफ कंपैरिजन। तो दिस इज अबाउट GS2। GS3 इज वेरी वास्ट, PYQs आर द बाइबल फॉर GS3। रिपीटेड थीम्स होते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग 3-4 बार पूछा गया फॉर एग्जांपल, एंड देयर आर क्वेश्चंस अबाउट, वन क्वेश्चन अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वन क्वेश्चन अबाउट द uh, if FDI, uh, ऐसे होते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, या इंटरनल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इनके बारे में एक-एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो मेक सम नोट्स अराउंड दोज़ टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ PYQs एंड रेफर टू इट मल्टीपल टाइम्स। Do value addition with the economic survey, budget and all to the questions wherever relevant. Agriculture हुआ है for example, budgetary allocations थोड़ा देख लेना, and न्यू स्कीम्स कुछ आए हैं, कुछ नोटवर्दी आए हैं, जैसे VBG राम जी था इस साल। तो ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर से आपको मिल जाते हैं। So that's the benefit of reading newspapers. So you can zero down on topics. So one more thing I want to mention very well is UPSC generally focuses on the topics which are famous. जनरल जनता को पता होता है। जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, देयर वाज़ अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स अबाउट दैट, राइट? तो हम सोचते हैं वो ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया, and we just yeah, after repetitive encounters in various materials, various sources about the topic, हम इतना ध्यान नहीं देते। So but I have made a mistake in that question in 2024 prelims, so इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया करो। That will help you. That's what UPSC is testing in the candidates. Generally aware, enthusiastic, socially concerned individuals to come into the service. तो ऐसा मेंस में भी ये वेरी रेलेवेंट। सो किसी भी साल के PYQs उठा के देख लोगे तो दे आर वेरी मच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ईयर्स करंट इवेंट हैपनिंग्स, तो फेमस करंट इवेंट हैपनिंग्स। तो वो दैट्स अबाउट GS3। GS4 इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंट बॉल गेम। दिस नीड्स मोर प्रैक्टिस टू कंप्लीट द पेपर विद इन 3 आवर्स। तो ये प्रैक्टिस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लेना। कंटेंट इधर से मिल जाता है, एक कंपाइलेशन ले लो और डू अ कोर्स इन यूट्यूब। कुछ भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको, इफ यू आर गेटिंग फेड by some perspectives, ethical perspectives, do it in a structured manner। एक perspective बना लो ओवरऑल, what is ethical thinking, what is ethical dilemma, ये जो keywords हैं UPSC syllabus में, those are your bible। write definitions around that, collect examples, compilations भी हैं, like topper notes हैं, पुराने toppers notes। I'll also post my the notes I have made, although it is a bit sporadic, but it might give you a hang of like how to do things in ethics। तो ये कर लो second priority कि मतलब, so that you will have some keywords and references to write in during the exam। So first is paper completion, second is ethical keywords, and third is practice of case studies। तो उनका
टॉपर कॉपीज़ रेफ़र कर लो, हाउ डू दे आंसर केस स्टडीज़, क्या फॉर्मेट रहता है, जैसे टेबल ड्रॉ करके प्रोस एंड कॉन्स लिखना, एक जनरल एक कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी है। नीड नॉट डाइवल्ज मच फ्रॉम दैट क्योंकि दोज़ आर ट्राइड एंड टेस्टेड। सो ये प्रैक्टिस करो इन एथिक्स। एथिक्स इज़ अ स्कोरिंग पेपर इफ यू कैन। It can also eat away your marks. So मेरे को तो in both the mains that I have given, I have scored somewhere around average only. So I kind of I feel I have figured out that I to be in the race, how do I manage with ethics, not flunking it in a big time. I was expecting very good marks in ethics this year, but I got only around 110. I was expecting above 120 or 125 because मैंने paper complete किया था. And again, so examiner might be expecting something else, a bit different from bit more from the answers. तो वो हो सकता है. And that's the same case with all the mains papers. So किसी एक चीज पे undue focus मत करना. Since we have covered essay and all the GS papers by now, now I'll come to general थोड़े aspects where uh, you'll have to pay your attention. किसी एक पेपर पे ज़्यादा attention मत बहा देना. Like GS3, because of the vastness of the syllabus, I have come across some of my juniors, some of the people I know, some of my friends who were very much worried about how to answer the questions that we don't know in GS3. GS3 में ही ज़्यादातर वो देखने को मिलता है. So you have basic idea about everything, almost everything in because of the prelims preparation and mains preparation. तो थोड़ा बहुत अपने जानते हुए लाइन्स में लिखो. Make sure you put your perspective in that एक extra dimension add कर लो. So I'll make a separate video on how to handle GS3. Because I have scored more marks than I expected this year. I thought I haven't done much better in GS3 compared to my previous attempt, but I was able to improve 7 marks in GS3. Although the marking patterns remain the same, GS3 is low scoring. So I scored 94 this year as compared to 87 in my previous mains. So आपको राइट समथिंग अबाउट दैट यू नो. कुछ क्वेश्चन आता है जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है. तो जैसे इस बार इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट्स के बारे में आया था. आई हैवंट रेड मच अबाउट दैट इन रिसेंटली. तो मेरे को जो पता था, जो पंचामृत which honorable prime minister has announced in the previous years 2023, as I remember 22-23. सो वो मेंशन कर दिया था एक फेयर मेमोरी से. दोस कीवर्ड्स मैटर दैट मतलब एग्जामिनर को समझ में आता है कि ही नोस, ही और शी नोस अबाउट दिस थिंग. एंड बिल्ड आई हैव बिल्ट अराउंड इट. आई हैव बिल्ट द प्रोग्रेस अराउंड इट. जैसे रिन्यूएबल कैपेसिटी हमने बढ़ा पाया, एंड और ग्रीनिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम्स, and even we're focusing on green cities, and carbon emissions के market based mechanisms, all of this. So I have mentioned some of those in the context of what has been asked in the question. तुम इसके so answer something. ठीक है, मतलब don't make factual errors, but you can write something that might yield 2 to 3 marks. जैसे आ, इस साल 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा आए होते हैं, आई वुड हैव इम्प्रूव्ड बाय 10 रैंक्स. सो दैट मैटर्स इन द एंड. सो एट द सेम टाइम डोंट गेट इनटू प्रेशर कि मतलब किसी क्वेश्चन नहीं पता है. ड्यूरिंग द एग्जाम हैंडलिंग प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस ब्रिंग्स अस टू सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट put your excessive attention on any particular paper. Second most important point is exam day. During the exam mindset is important. You will test it by giving mocks, by practice. So उस दिन कुछ अलग नहीं करने जाना है. So during the exam don't evaluate your own answers. ठीक है, आपने आंसर कर दिया एक क्वेश्चन, go ahead for the next question. वो भी within the given 7 to 10 minutes, which are the 10 markers or 15 markers, उसमें आंसर कर लेना, आगे बढ़ जाना. Don't get into evaluating, don't get into uh, looking back to the answers you have already written, because that is not going to help. That will eat up your time, which is already short. तो ये second most important point है. Third most important point है complete the paper. First point से correlation है इसका.
So if you can complete the paper only if you also write the answers after the questions which you don't know much about, and also with the practice, which is second point. So complete the paper. And fourth important aspect is value addition. Value addition मतलब कुछ ना कुछ यूनिक अपना लिखो. Like a GS4 में I have used psychology, GS1 society में I have used psychology, and GS3 में I have used examples from my own state आंध्र प्रदेश. मतलब internal security के questions में एक fair memories में थे. uh, बचपन में कुछ have come across some news during my childhood. कुछ ना कुछ आसपास, if you talk to your mom or dad, there are some famous topics that they discuss, general political and कुछ भी हो, anything. These things you can add those as your unique points. You can express yourself, you can put your perspective in that. So वो that will add a bit more of ingenuity to your answers, which will help examiner decide that uh, your answers have some merit and they deserve bit more extra marks. मतलब 20 questions में से you can make your answers excellent. You can write excellent answers for 3 to 4 questions in my case, and very good answers for 3 to 4 questions, and good answers for 6 to 7 questions, and average answers to 4 to 5 questions, and below average or substandard answers to 2 to 3 questions, and I have left one question in all of the GS papers, 110 marker. So that's natural, but वो भी नहीं छोड़ता, 2-3 मार्क इधर-उधर ऐड हो जाते हैं. That has made all the difference for me this year. मतलब I could have comfortably stayed below rank 60, 70. So I'm not saying to compare with others. तो ये ऐसा है कि मतलब ये छोटे-छोटे चीज़ें will add up in the end, and आपका सर्विस वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा सर्विस मिलेगा आपको. So this is about mains. तो इंटरव्यू के लिए आई हैवंट स्कोर्ड वेरी वेल इन इंटरव्यू इन बोथ माय इंटरव्यूज, बट आई हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फ्रॉम माय प्रीवियस इंटरव्यू. आई हैव स्कोर्ड 162 इन माय प्रीवियस इंटरव्यू. दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड 179. इस बार स्कोर्स भी थोड़ा हायर साइड पे थे. तो 179 इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर. इट्स अबव एवरेज स्कोर, बट आई हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड. आई हैव फोकस्ड ऑन बीइंग बैलेंस्ड इन माय आंसर्स. जैसे आपसे पूछा जाएगा कि why is the basic infrastructure in educational sector is not good? So I cannot outright say ki that's because of the execution issues or corruption or something. So you should be saying yes ma'am or sir, that there are issues. There is a bit of lesser focus so far, but there are good examples also. You can name states, some states like Kerala, Andhra Pradesh. So where political will and even certain amount of focus of funds have yielded good infrastructure. So ये basic balanced answer हो गया. So if I outright mention that execution problems, it's a bit non-officerish answer. So I think uh, have improved on those lines. I needed more improvement probably uh, uh, in terms of giving balanced opinions, in terms of giving wide answers, wider perspectives. जैसे पूछा जाता है कि what are the मैं I'm in the rural governance. I'm a part of Department of Panchayati Raj as an MPDO or Block Development Officer, AKA. So मेरे से पूछा गया था कि what is your analysis on the core problems of the rural sector of India. So I have mentioned that I have used the case study that I have come across. I have mentioned that people are not aware of the many people are not aware of the benefits that the government is providing. There is lesser health seeking behavior. So these are narrow perspectives in my opinion. The same answers I have given. The broader would be to focus on wider ones, key educational uh, indicators, social indicators, consumption patterns, waste management. So up, you expand your answer to as much as you can, the, and expand only in those areas which you can answer the follow-up questions. So this is about interview. This was how I could improve a bit of my score.
by being more balanced, थोड़ा wider होते हुए अपने answers को, but they needed to be much wider and much balanced, which is why I could score only above average. I was expecting around 190, 190, 195, but I scored only 179, so rounding it to 180. So this is about my journey of prelims, mains, and interview. So now about the special cases like CSAT. So CSAT may I haven't done any practice for CSAT. So I'll be able to talk about how to handle during the exam time part. So uh, pick the questions that you can solve. So if you are finding maths as tough, figure it out in the first 15 to 20 minutes कि कौन सा section easy आया उस साल. This is 2023 का paper is considered to be toughest CSAT of all time. So which I have flunked. Uh, I myself am a KVPY scholar. Have even cleared maths Olympiads at school level. ठीक है, and I am a BITS Pilani graduate. Nothing of this could stop me to not clear CSAT that year. So because of my time mismanagement during the exam and my complacency, result आए हुए 5 ही दिन हुए थे उस time पे, which I couldn't emotionally quite manage. तो be careful during the CSAT exam, no matter how good you are with maths. पहले practice करो, courses करो, जो भी करना है करो, whichever you find suitable. But during the exam, you need to be careful. तो ये pick करो which section is easy that year. Reasoning या maths या comprehension. 2023 में comprehension easy था, but I started with maths and I stuck with maths for the first 1 hour, which has driven me into a lot of pressure. I missed the final cutoff of CSAT by some 3.5 marks, less than 3.5 marks, which is one question and with negative added. So be careful in CSAT, time management, and answer as many questions as possible. And towards the end, pressure कम रखने से you'll do lesser mistakes towards the end. So answer as many as you can in the first 1 hour by picking easier questions, the low hanging fruits. So that's the strategy that I used for CSAT. And now coming to the most important part, मैं जिस लिए वीडियोस इन द फर्स्ट प्लेस एक यूट्यूब चैनल पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया था, दैट इज अबाउट माय ऑप्शनल साइकोलॉजी. So I'll make an elaborate video about my optional again, but yeah, mentioning it briefly here so that you can have an expectation about what I can provide through this. So I haven't done any coaching for psychology, neither for GS. मैंने coaching कहीं से नहीं लिया, कहीं भी, not in any part of my preparation. I've done self study. I have given mock tests. I haven't relied much on evaluators' comments. I have done my own evaluation. I'm being honest here. I have fell into the evaluators' comments in the beginning. तो कई बार सूट करते कई बार नहीं करते हैं. I'm not overall dismissing that. You can, if it suits you, if you know the person who is evaluating your answer, that's when it matters. Else it doesn't matter. Who you need not see the evaluation comments if you don't know the evaluator. तो ये साइकोलॉजी के लिए भी अप्लाई करता है. मैंने कोचिंग नहीं लिया. I have taken a test series which wasn't useful for me at all. That even has eaten up my time. I'm not going to mention the name. I have done PYQs extensively. I have restricted my preparation of psychology to those PYQs in this attempt, which has yielded good result. In my previous mains, which was my first mains, I've scored around 272, which has proven that yes, I can go well with psychology. वो 3-4 महीने की प्रिपरेशन थी तब तक साइकोलॉजी की, सो दैट वाज गुड. आई हैव रेफर्ड टू बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज and Baron for paper 1 and Smarak Swain for paper 2. These are general ones. I have referred to NCRIO website. The earlier psychology, he has gotten a good score in psychology, but he unfortunately couldn't clear the final cutoff. But he has put a lot of helpful content on his website, NCRIO, ENSERIO. I would recommend anyone taking psychology optional to go through this website and
make the most out of it and thank Ankit sir for this. Uh, and also there was this topper Anurag Jain sir in 2018 CSE, rank 31, I guess. He scored 333 in psychology. So these two blogs have helped me in shaping my preparation, my content. So if you ask me about what guidance I have taken about for psychology, I'll mention these two as my. I have gone through those blogs and websites for at least 100 times throughout the 5 years of my journey. So those are sufficient. And in case you have any query with referring to specific topics, you can always ask in Reddit or post on Quora or refer to YouTube videos. Anywhere there is a lot of now AI is there. I've extensively used ChatGPT for psychology, which has helped me structure my answers much better. This time I have scored 290, 114 paper 1 and 115 paper 2. You can refer to my marks in my Telegram channel, which I'm going to comment and put in the description below. So this was regarding my psychology optional, my score, and the sources I have referred to. So I'll make a separate video on based on your comments, which part you want elaboration on. मतलब कोई specific questions आपको आते हैं तो you can comment here. I'll duly take them into consideration and I'll make videos around those, not just for psychology, for other GS papers or prelims or CSAT, or even in general emotional management during the journey, because I really think I'm in a position to uh, talk about handling failures and all. So this is the I thought it will be brief, but it was 46 minutes, 47 minutes. So this is about my journey. And if you wish to know anything more uh, about any specific aspect, you can just comment on it. Or if you have my number, you can just message on it. You can uh, 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 comment anywhere on social media, anywhere, kahin bhi. If I come across any certain question, if I think I can answer that, I'll make a video and post it, or I can answer in text right away. So I'm doing this to take forward the trend of keeping the education as a free pursuit, mentorship as a free pursuit. क्योंकि there's a lot of widening inequality, बहुत तरीके के inequality आ रहा है मतलब it is manifesting itself in the society in various uh, fashions. So I want to take forward. I have learned a lot from the free resources on YouTube on and some uh, good people, really good people who have guided me for free. So I want to take that forward. आप भी शेयर कर लेना इस वीडियो को. आप भी you also help them reach out to me or anyone who is in the position to answer their question. So let's form this virtuous cycle of uh, bringing the truth onto the ones who are seeking it. So all the best. Post any question. I'll be happy, more than happy to answer. And thank you for your wishes, your well wishes, and any good thing that you're taking up in your life. Thank you for that, for making the world a better place by doing good things. Thank you.